Yes, as you said. Yes, good afternoon, everyone. Welcome to this insightful session hosted by Homeopathy 360. I am Dr. Noori, Homeopathy editor, and I am honored to be your moderator for today's webinar titled The Foundation of Healing, Effective Case Taking in Homeopathic Practice. So, this topic lies at the very heart of homeopathic success. Case taking isn't just a clinical process, it's an art, a dialogue, and often the turning point in the healing journey of our patients. It gives me immense pleasure to introduce our speaker for today, Dr. Amol Pramodrao Pathak, a distinguished academician and practitioner in the field of homeopathy. Having completed his PhD, Sir is currently serving as the HOD and professor in the Department of Practice of Medicine with Essentials of Pharmacology at Sumandeep Homeopathic Medical College and Hospital, Vadodara, Gujarat. He brings with him over a decade of rich clinical and academic experience, having served as associate professor and assistant professor at prestigious institutions. Sir has also published more than 15 research articles, including publications in Scopus and Web of Science index journals, contributing significantly to evidence based homeopathic practice. With a clinical foundation rooted in years of service, his approach beautifully combines bedside experience with academic rigor. Today, he will be shedding light on how effective case taking forms the cornerstone of successful homeopathic prescriptions. So, without further ado, please join me in welcoming Dr. Amol Pathak. Sir, it is a pleasure to have you with us today. Thank you. Thank you, Dr. Noori. Before I begin this session, I would like to thank Homeopathic 360 for giving me this opportunity to share my views on this beautiful topic. Good afternoon, all the listeners. I am expecting the practitioners, students of homeopathy. So I would be trying to justify the needs and requirements of both of you, the practitioners as well as the students. So please let us let us discuss about this beautiful topic. As Dr. Noori has said, the title of my today's presentation is The Foundation of Healing, Effective Case Taking in Homeopathic Practice. Before I start this, I want to tell you that why I chose this topic. In aphorism number 71 of Organon of Medicine, Dr. Hahnemann has said that for the operation of healing or curing, there are three important steps that every physician must have to know. The first thing that he needs to know is to know about the disease and what is curable, what is to be noticed in a diseased person. The second thing he is telling about the knowledge of the medicine. The physician must have to know in details about the instrument. Dr. Hahnemann is using the word instrument for medicine. So what he says is the physician must have to have the knowledge about the instrument that he is intended to use the diseased person. And the third point that Dr. Hahnemann has said is the third point is how to apply that instrument. So in today's era, if we consider this, that is called as rational prescription. What is rational prescription? It is prescribing the right medicine in a right dose to a right patient by a right route. Route means mode of administration. So if any physician is following these steps, he will be doing the rational prescription. Right medicine in a right dose, in a right route to a right patient. That is what is called as rational prescription. And we are doing this since many years. Our medicines are prescribed completely on the basis of the individualization. So how we individualize the patient, that is on the basis of case taking. So if we meet that demand of individualization, if we are going to prescribe our medicine on the basis of individualization, we must have to know that how to individualize that patient and how to take the case. So coming to this point, let us start with the session. Let me tell you what is the definition of case taking. So case taking in very simple language, it is nothing but
recording of the patient's symptoms. We all know that it is nothing but the recording of patient's symptoms. Now, in the 6th edition of Organon of Medicine, Dr. Henneman has explained in details about this case taking from aphorism number 83 to aphorism number 104. And he has detailed it very beautifully, and we are going to see what he has mentioned. So all of us might be knowing all those things. I want to share what I understood and what is my interpretation about all these things. So before we go in details of aphorism, let me tell you why we should do a good case taking. What are the objectives of case taking? The first and foremost objective of case taking is to establish and build up a rapport with the patient. If we can successfully establish the rapport with the patient, it means that the patient will give his symptoms, and on those basis of those symptoms we will be prescribing. Nowadays, what we notice that before the physician even establishes a rapport with the patient, he is already prepared with the medicine in his mind. That is not called as the rational practice of medicine. पेशेंट के साथ में रैपो भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है अभी तक, या पेशेंट का फिजिशियन के साथ रैपो भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, और फिजिशियन ने डायग्नोसिस भी कर लिया है और उसके इन्वेस्टिगेशंस भी सोच रखे हैं, और यहाँ तक कि उसको क्या करना है, एडमिट करना है या प्रिस्क्रिप्शन देके भेज देना है, ये फिजिशियन ने अपने मन में बना के रख लिया है. तो अगर कोई ऐसे कर रहा है, that is not called as the rational practice. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा केस टेकिंग का? फिजिशियन का पेशेंट के साथ में रैपो एस्टेब्लिश होना चाहिए, और पेशेंट का भी उसी तरीके से फिजिशियन के साथ भी रैपो एस्टेब्लिश होना चाहिए. अब ये रैपो एस्टेब्लिश किस लिए होना चाहिए? व्हाई इट शुड बी मेंटेन्ड, व्हाई इट शुड बी एस्टेब्लिश्ड? उसका रीजन है, द रीजन बिहाइंड इट इज दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रैपो will help us in making a diagnosis of a disease, as well as in the next it will help us in making the prognosis of the disease. By taking a good case, we will be able to understand our patient as well as his disease in its all aspects. In its all aspects means what is the cause of disease, what are the ailments of the patient, what are the maintaining factors, exciting factors, aggravating, ameliorating factors, etc. We can know about all these details if we do proper case taking. So the fourth point, the fourth objective of a good case taking is to select a good or a best suited remedy for that patient. So only on the basis of a good case taking we will be able to individualize the case, and on the basis of individualization we will be able to select a good remedy, a best suited remedy for the patient. So in order to reach to that point, we need to do this foundation, we need to make this foundation. Apart from this, we get one more additional benefit from good case taking, and that is it helps in emotional catharsis of a patient. What is emotional catharsis? These are the pent up emotions or suppressed emotions that the patient have not shared with anybody. So if we pay attention to the patient's complaint, if we give him a good time, if the patient starts trusting us, he will have emotional catharsis. His pent up emotions, suppressed emotions, they will get released and patient will feel better mentally. So these are some of the objectives which I have understood from reading the Organon of Medicine, and especially the aphorisms related to case taking. Personally, what I feel is what we call it in general terms is USP. What is USP of homeopathy is this portion, case taking and classification of diseases. None of the other systems of medicine, I don't think that they have dealt with these two aspects in so much of details that Dr. Henneman had did. Classification of the disease and the case taking process. Coming to the next point, let us start with the aphorisms now.
Now look at the beauty of the arrangement of these aphorisms. The first aphorism of case taking is aphorism number 83. And what Dr. Hahnemann is telling in this aphorism is just what are the prerequisites, what are the requirements of a physician, what physician should know when he begins the case taking, what are the prerequisites. So Dr. Hahnemann simply says the physician, whenever he starts case taking, he must have to be free from prejudices. Prejudices means what? These are preoccupied ideas. The physician, whenever he approaches any patient, he must have to be free from prejudices. He must have to be in sound senses. That means all his sense organs, his skin, ears, eyes, everything, nose, everything should have to be at one place, not just organically, but he must be using all those senses in order to know his patient. It should not happen that he is looking somewhere else and listening to the patient. He is touching to the patient and looking somewhere else. This should not happen during the process of case taking. So maintaining sound senses is very important while doing case taking. The third point, the third prerequisite is attention in observing. The physician must have to be attentive and he must have to be very much what he is saying that fidelity in tracing the picture of disease. ईमानदार होना चाहिए physician. जब भी वो किसी भी disease का picture बनाने की कोशिश कर रहा है, he must have to be honest. He must have to be fidel. Fidelity होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए. अपने मन से कुछ भी उसमें add on नहीं करना है. तो बस यही चार चीजें लेके physician को वहाँ पे बैठना है. He has to sit and listen to the patient. Without having any preoccupied ideas in the mind, all senses directed towards the patient, fully attentive in listening. जैसे अभी आप लोग पूरी तरीके से attentive हो सेशन सुनने में, बस उसी तरीके से आँख, कान, नाक सब कुछ पेशेंट के लिए डेडिकेटेड बस और फिडेलिटी होनी चाहिए. तो एफोरिज्म नंबर 83 में सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा है. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एफोरिज्म नंबर 84. अब यहाँ पे डॉक्टर हैनेमैन इन दिस एफोरिज्म डॉक्टर हैनेमैन इज टेलिंग अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ अ फिजिशियन. नाउ द पेशेंट इज इन फ्रंट ऑफ हिम, द फिजिशियन इज सिटिंग. व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिशियन? फिजिशियन को सिर्फ बैठ के पेशेंट को साइलेंटली ऑब्जर्व करना है, सुनते रहना है. फिजिशियन, the role of a physician is as a silent observer. सुनते रहो. पेशेंट की सुन लो, उसके बाद उसके रिलेटिव्स की सुनो. Just keep on listening and avoid all kinds of interruption. Not even verbal or physical. No interruption is required. No interruption should be done when the patient is telling or narrating his complaints, his or her complaints. The interesting point is why this should be done. What is the reason of this? That Dr. Hahnemann has explained in the footnote of this aphorism. So in footnote number 81 of aphorism number 84, Dr. Hahnemann is explaining the importance of uninterruption. What he is saying that if we keep on interrupting the patient repeatedly, the patient will lose the connection of his thoughts. And what he was intended to speak or tell, he might not tell you after interrupting. So let the patient complete his symptoms and then the physician should ask if something else is required. So in aphorism number 83, there were just the prerequisites of a physician: silent, he must have to be sound sense, fidel, etc., etc. In aphorism number 84, even though he is a physician, he should be mum, he should keep mum, he should keep on listening to the patient. Coming to the next aphorism, aphorism number 85. What he is saying that just tell the patient that when you are narrating your complaints, speak slowly so that I can get time to write down your complaints. And while writing those complaints, Dr. Hahnemann has instructed the physician that keep writing the complaint on a separate line and keep some space between two complaints so that other additional points, when we get those points later on, we can add on them in that space.
So that too, Dr. Hahnemann has mentioned. Write down every complaint on new line. Fresh symptom, fresh line. And must write down all the complaints in the same words or expressions that were used by the patient. So just think about these directions given by Dr. Hahnemann. He has not missed even a single point while explaining case taking. Coming to next aphorism, aphorism number 86. Now, here in this aphorism, the role of a physician from a silent observer, it gets changed into interrogator. What he says is, once the patient and his relative has completed telling about the presenting complaints, now the physician should start asking. Now, what he should ask, Dr. Hahnemann has given guidelines for that too. What he says is, when you start asking, begin with the location, sensation, modalities, concomitants, onset, duration, and progress of the disease. Don't jump into something very like radical mental or physical generals. No, before that needs to be taken, no doubt. But before that, those things are asked, first begin with simple questions. What is the location? How is the sensation? What are the modalities of your complaints? What are the concomitants of the complaint? How do you take any medicines for those complaints? When these complaints started, onset, duration, progress, how long you are suffering from this, how the symptoms progress, etc. So in that aphorism, Dr. Hahnemann is just explaining about the things that needs to be inquired in the very beginning. Now, once this is done, once we are doing this, he has again mentioned about, he has again given us one red signal that when we are inquiring, don't ever land up into asking leading questions or direct questions. He is using the word suggestible questions to this. So don't ever use any leading question, direct question, or suggestible question. Just like first footnote number 81, the reason for not asking leading question is also mentioned in the footnote number 82. What he is saying that if we ask the leading questions to the patient may answer them in order to please that physician, or he may not give the true picture of a disease. He will create a false picture of a disease by asking the leading questions. So avoid asking leading questions. Now, in the next aphorism, that is in aphorism number 88. Hello. Yeah. Now, in aphorism number 88, once we have finished the history of present illness, location, sensation, modality, etc., then Dr. Hahnemann asks us to slowly ask for more particular symptoms of a patient. He tells us now to start asking the physical generals of the patient. He asks us to inquire about the mental state of the patient. So what to do, what to ask in these aphorisms, what to do and what to ask in this mental general and physical generals, that is also mentioned in the footnote number 83. In aphorism number 89, Dr. Hahnemann has said that the physician can ask more precise and special questions at the end of case taking. थोड़े और ज्यादा फिजिकल या प्रिसाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो अब इस एफोरिज्म में एफोरिज्म 88 और 89 में फर्क क्या है? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आस्क अबाउट द थर्स्ट, डिजायर, एवर्जन, stool, urine, appetite, etc. Mentals, anger, anxieties, fears, etc. But in aphorism number 89, he is asking about more precise questions about the physical generals or mental generals. Like if we are asking about the stool or urine, ask for the character, any symptoms before, during, after the stool, etc., etc. So these type of precise questions can be asked to a patient, and that is explained in footnote number 84.
So with that actually that finishes the process of case taking from aphorism number 83 to 89. That completely that ends the process of case taking. With that, there is no need to ask something else. After completing the mental generals and physical generals, we can actually stop the process of case taking. So what I think personally is nowadays I have also seen that we ask like we ask about the daily routine of a patient, we ask about the antenatal history and everything, but like those things were not mentioned in the aphorisms. Maybe some physicians are doing it, they are having some their own personal experiences for that. But let us stick with our topic of case taking as per the Dr. Haneman. Okay. So in aphorism number 90, now Dr. Haneman tells us about putting our own observations about the patient. Physicians' observations about patients, his state of mind, what was his behavior during the interview, whether he was restless, whether he was sad, whether he was feeling happy, whether he was very flamboyant, whether he was very energetic, whether he was cheerful, etc., etc. So now the physician is given a freedom to note his own observations about the patient during the process of case taking. Similarly, the physician should do physical examination and he should write down the color of face, color of eyes, the breathing pattern, the rate rhythm, everything that we know in practice of medicine, the state of abdomen, state of pulse, etc. So physical examination is also given importance and the findings should be mentioned. Now coming to the next part of case taking. So what is happening from aphorism number 91 onwards is now Dr. Haneman is trying to tell us about different types of diseases and what to do in those diseases, different types of patients and what to do in those types of patients. Like if we are getting a chronic disease, if we are getting acute disease, if we are getting the hypochondriac patient, if we are getting the indolent patient, if we are getting a patient suffering from epidemic diseases, so what should we do in such cases? So up to 90, aphorism number 90, it is actually the part of case taking. ये करो, इतना करो. अब 91 से 104 तक क्या हो रहा है? डॉक्टर हैनेमैन हमारे सामने अलग-अलग पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं कि अगर आप ओपीडी में बैठे हैं और आपके सामने एक पेशेंट आता है जिसको क्रॉनिक डिसीज है, तो आपको क्या करना है? अगर किसी को अक्यूट डिसीज है, तो आपको क्या करना है? अगर आपके पास में अक्यूट एक्साजर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज का पेशेंट आता है, तो क्या करना है? लाइक दैट. तो अब हम इन्हीं चीजों पे चलने वाले हैं. So coming to aphorism number 91. So what he is saying that what to do in chronic diseases for tracing the pure and original picture of the disease, especially when the patient is referred by another physician and is already taking some medicines. तो बहुत कॉमन फाइंडिंग होती है, बहुत कॉमन सिनेरियो है. होम्योपैथ के पास जब भी कोई फिजिशियन आता है वो फर्स्ट हैंड आया है, ऐसा बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है. The patient has already tried and tested with many other systems of medicine. He might be having relief, temporary relief. The disease might have relapsed after a period of time, and now that is why he has came to homeopathy. So that is a case, that is a chronic case. So what Dr. Haneman is saying that whenever you are witnessing a patient who is suffering from a chronic case, especially when he has taken some medicine, so he is warning the physicians that don't rely on the symptoms now the patient is stating to you, because these symptoms are actually the combination of a disease that he is suffering from, plus it is a symptom of the medicine that the patient was already taking. So this is not a true picture of a disease. So the true picture can be obtained by either stopping all the medicines, giving the patient with just placebo, asking him to visit few days later and taking the case. This is the one method that can be used. When that patient with chronic disease comes to your OPD, is already taking some medicines, that is, he is not giving you a true picture of disease because it is a combination. So what should we do? Just
give the patient something unmedicinal like placebo and ask him to visit later on, stop the medicine, stop the previous medicine and visit later on after a few days and then take the case. That will give us the true picture of disease. Or the second method that can be used is ask the patient about the complaints that he had suffered from before starting that medicine, before starting that actual medicine that now the patient is taking. So try to elicit the symptoms which the patient had suffered before starting the medicine. So that should be done in cases of chronic diseases. Now, the second point is about the conjoint malady. Conjoint malady ये word डॉक्टर हैनेमैन ने यूज किया है जब कोई मेडिसिनल डिसीज कंबाइन हो जाती है ओरिजिनल डिसीज के साथ में, तो तब उससे जो हम उसको हम आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज भी कह सकते हैं, तो उसको उन्होंने वर्ड यूज किया है conjoint malady. अब वो क्या कह रहे हैं, what he is telling that if we are witnessing any patient of acute exacerbation of a chronic disease and where we cannot delay the treatment, we must not think about the true picture of a disease. Instead of that, whatever symptoms or signs we have in our hand, prescribe on the basis of those symptoms. This is limited, this is specially limited to those conjoint maladies only. Okay, chronic disease में नहीं करना है. If it is acute exacerbation of a chronic disease, then we can do it. Whatever the symptoms we are having in our hand, on the basis of that, just prescribe the medicine. Now, this is the best part that I feel is there are very minute chances, there are rare chances where the patient is not actually willing us to tell the cause of his disease. Neither the patient nor the attendant or nor the relative of that patient. So all such diseases where the patient is not willing to tell the cause of a disease will be called as obvious cause. The patient has came to us, he is narrating the symptoms, but he is not willing to tell the causation of a disease. So these are the diseases brought on due to the obvious cause. Obvious means those cause that the patient does not want to disclose, right? So if we are witnessing such patient, then what we should do? Dr. Hahnemann says that take that patient in full confidence and inquire about the cause privately. So first point he is telling about such diseases is take the patient into confidence and ask about these obvious causes or those causes that the patient does not want to disclose privately. And what can be such cause? So there can be various causes which the patient does not want to disclose openly, such as like some menstrual history, obstetrical history, sexual history, drug history, right? Any abuse. So such things the patient does not want to disclose openly. So these are called as the obvious causes. So to know about these causes, the personal inquiry with full confidence is required. So that is explained in the footnote number 86. Now, coming to the next aphorism, in aphorism number 94, look at this beauty again, once again. Dr. Hahnemann is telling that you have finished the case taking process, no doubt, but never forget to know about the maintaining cause as well as exciting cause of the disease, because sometimes these causes are leading to or causing the obstacles in the process of cure or obstacles in the path of cure. So if we do not remove those maintaining causes or exciting causes, we cannot actually or truly heal the patient. So it is necessary to ask about the maintaining cause and exciting cause. So again, I want to take you to the aphorism number 71. वहाँ पे डॉक्टर हैनेमैन कह रहे हैं कि आपको पेशेंट को क्या पूछना है, इसका नॉलेज भी होना चाहिए. सिर्फ ऐसा नहीं कि पेशेंट आया, उसने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स दे दिया और उसके बेसिस पे आपने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया. अगर ऐसे कर रहे हो तो गलत कर रहे हो. तो फिजिशियन मस्ट हैव टू नो व्हाट टू आस्क द पेशेंट, एंड फॉर दैट
after physical general, after presenting complaints, ask for the history of present illness, ask for the mental general, physical general, ask for maintaining causes, ask for exciting causes. This much we need to ask to form the totality. Okay. So, especially inquiry about maintaining cause and exciting cause is necessary in cases of chronic diseases. At the same time, Dr. Hahnemann is also asking us to inquire about the occupational history, dietary history, family routine, menstrual history, gynecological history, etc. Coming to the next aphorism, where Dr. Hahnemann has mentioned about accessory symptoms. Now, again, these accessory symptoms are common in cases of chronic diseases. So, these accessory symptoms actually they are not very bothersome to the patient. And as those accessory symptoms are not bothersome to the patient actually does not tells us about the accessory symptoms. But what he is saying, Dr. Hahnemann is saying, these are the most characteristic symptoms of the patient and are most helpful for the choice of remedy. So even though the patient is neglecting them, the physician must inquire about the accessory symptoms of the disease. Coming to the next. Here, from here onwards, Dr. Hahnemann is telling us about different kinds of patients that we can witness. So in that, he is explaining about two different types of patient, hypochondriac patient and indolent patient. So what is hypochondriac patient that Dr. Hahnemann has mentioned in aphorism number 96. I repeat, aphorism number 96, he has explained about hypochondriac patient. So who are hypochondriac patients? So these are the patients who narrate their complaints in two vivid colors. They tend to exaggerate those complaints. Now, Dr. Hahnemann is telling that the patient is exaggerating the symptoms, not because he is insane. So many of the times, it happens that we consider hypochondriacs as insane, but यहाँ पे डॉक्टर ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि hypochondriacs are different from the insane peoples और the famous और जो नाटक कर रहे हैं डिसीज होने का जो नाटक कर रहे हैं उनसे hypochondriac patients अलग होते हैं. तो ये हम एक सोच रखा है कि hypochondriac patient मतलब नाटक करने वाला पेशेंट होता है. तो यहीं पे वार्निंग दी हुई है कि hypochondriac patients मतलब नाटक करने वाले पेशेंट नहीं है. They are exaggerating, they are telling their symptoms in two vivid colors because they are hypersensitive. वो कह रहे हैं कि वो hypersensitive है, इसीलिए वो ज्यादा नैरेट कर रहे हैं अलग अलग कलर्स में वो उसको. तो उसका रीजन जानने की कोशिश की. Why the patient is hypersensitive? इसे जानना जरूरी है rather than naming the patient और rather than उनको कोई टैग लगा देने से ये अच्छा है कि वो क्यों हाइपर सेंसिटिव है वो जानो. तो यहाँ पे डॉक्टर ने हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स के बारे में कहा है. उसी तरीके से नेक्स्ट एफोरिज्म में डॉक्टर हैनेमैन इज टेलिंग अस अबाउट इंडोलेंट पेशेंट. तो इंडोलेंट पेशेंट ये वो होते हैं कि जो अपने सिम्टम्स को बताना नहीं चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि वो छुपा रहे हैं सिम्टम्स को, बट दे आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम नैरेटिंग देयर सिम्टम्स. वो बताना नहीं चाह रहे हैं. क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं उसके भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं. इट कुड बी, डॉक्टर हैनेमैन ने वो भी मेंशन किया है, इट कुड बी फॉल्स मॉडेस्टी. उनको लगता है कि क्यों बताए, क्यों डॉक्टर का टाइम खर्च करे, क्यों ज्यादा परेशान करे, जो जरूरी है वो बता दो, जो बिना जरूरी गैर जरूरी चीजें हैं उनको क्यों एक्सप्लेन करना है. फॉल्स मॉडेस्टी की वजह से कई बार कभी-कभी ये वीकनेस ऑफ मेमोरी की वजह से भी हो सकता है. The patient might actually suffering from a weakness of memory and that is why he is refraining from telling the symptoms. We will wait for sir. I think there is some signal issues.
Audience, we'll wait for Sir to join. While Sir is rejoining in the chat box, please check out our social media account login. You can subscribe to our YouTube channel where we continuously update all the expert talks and webinars, whichever are coming. And yes, we have Sir with us. Yeah. Just give me a few seconds. I will again reshare my PPT. Yeah, sure, sir. Okay, is the screen visible? Yes, we can see. Yes. So in coming to the next point, in aphorism number 98, so वो कह रहे हैं कि हम पेशेंट से भी कंप्लेंट्स लेते हैं, फिजिशियन हमारा ऑब्जर्वेशन भी लिखते हैं और रिलेटिव से भी कंप्लेंट्स लेते हैं. तो इतना सारा जब डेटा हमारे पास जमा हो जाता है, व्हाट वी शुड एम्फसाइज ऑन, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देना है? So what he is saying that the importance should be given to the patient's expression of his complaints. पेशेंट जो कह रहा है उसे हमें देना है, ना कि उसके रिलेटिव्स को. उसका रीजन ये है कि रिलेटिव्स हो सकता है उसके वर्ड्स ही माइट बी यूजिंग इनकरेक्ट वर्ड्स टू नरेट द पेशेंट्स complaints. So you always take the patient's expression in your case taking. This is what उन्होंने कहा है. Plus at the same time डॉक्टर हनेमैन हमें ये वार्न भी कर रहे हैं कि फिजिशियन को ह्यूमन नेचर के बारे में नॉलेज होना चाहिए. उसे पता होना चाहिए कि कब झूठ बोला जा रहा है, कब एग्जैगरेट किया जा रहा है, कब चीजों को छुपाया जा रहा है. He must have to have that knowledge. The physician must have to have that knowledge. He must have to be tactful. जैसे obvious causes में हमने देखा कि कैसे उस obvious cause को बाहर निकालना है. It is not a simple thing. जो नहीं बताना चाहता है उसको कैसे निकालना है. So physician must have to be tactful during inquiry. He must have to be patient. और ये आज के सिनारियो में बहुत जरूरी है. The physician must have to be patient. He must not be rushing behind कि मुझे एक पेशेंट खत्म करके दूसरा देखना है, फिर तीसरा देखना है, दिन भर में 100 का ओपीडी करना है, 200 का. ऐसा फिजिशियन को नहीं करना चाहिए. He must have to be tactful, he must have to be patient and cautious during the process of case taking. Coming to the next point, in aphorism number 99, he is comparing the process of case taking with the process of case taking, comparing the process of case taking in chronic diseases with the process of case taking in acute diseases. So what he is saying that if you are witnessing a patient suffering from acute disease, the case taking will become easier. The reason is the symptoms are very new to the patient. They are very like abhi taza hai, fresh. The symptoms are very much fresh to the patient. And they will be unaltered. जो है वो पेशेंट बता देगा, उसमें कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं होंगे. साथ ही साथ जो भी प्रोमिनेंट फाइंडिंग्स है उस डिसीज की, वो फिजिशियन को तुरंत समझ में आएगी. पेशेंट ने उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उस फाइंडिंग को मैनिपुलेट करने के लिए कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है. तो इन रीजंस की वजह से केस टेकिंग इन एक्यूट डिसीज becomes easier as compared to the process of case taking in chronic diseases. अब यहाँ से शुरू होता है एपिडेमिक डिसीजेस का पार्ट. मतलब इसके बारे में भी डॉक्टर हैनेमैन ने सोच के रखा है कि अगर कोई एपिडेमिक डिसीज चल रही है या कोई स्पोरेडिक डिसीज कहीं पे फैली हुई है और उसकी वजह से आपकी ओपीडी में बार-बार पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उस केस में कैसे करना है, उस केस में क्या करना है. तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो यू कैन सी द ब्यूटीफुली अरेंज्ड एफोरिज्म्स. सिंपल एकदम प्री रिक्विजिट्स ऑफ फिजिशियन 83 में दिया था कि भाई आपको ऐसा ऐसा होना है, और फिर वहां से लेकर डॉक्टर हैनेमैन हमें अब यहाँ तक लेके आए हुए हैं और बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में और बड़े ही सिंपल शब्दों में वो हर चीज को, हर पॉसिबिलिटी को हमारे सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है तो क्या करना है.
ऐसा है तो क्या करना है और क्या करना है एक्सेट्रा। तो अब चलते हैं हम एफोरिज्म नंबर 100 पे, जहां पे डॉक्टर हैनेमैन हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर केस टेकिंग आप कर रहे हो किसी एपिडेमिक डिसीज की या स्पोरेडिक डिसीज की, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। So the first point that Dr. Hahnemann is telling is, even if you are witnessing an epidemic disease or a sporadic disease, don't get carried away and consider every patient of that disease as a new patient and investigate it thoroughly. अब थोड़े सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझे तो यहाँ पे डॉक्टर हैनेमैन कह रहे हैं कि डोंट गेट प्रिजुडिस कि इस डिसीज के बारे में तो ऑलरेडी सब कुछ पता है सब लोगों को, मुझे पता करने की क्या जरूरत है। और अगर हम थोड़ा और इसको टेक्निकली समझने की बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर हैनेमैन हमें रिसर्च करने के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भले ही कितना भी रिसर्च उस पर हो चुका हो, भले ही कितनी भी इंफॉर्मेशन उस डिसीज के बारे में सोसाइटी में ऑलरेडी अवेलेबल हो, आप कैरिड अवे मत हो जाना। आप अभी भी स्कोप रखना कि उसके बारे में कोई फर्दर रिसर्च किया जा सकता है या नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी उसमें रिसर्च की है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए, ये वार्निंग डॉक्टर हैनेमैन वहां हमारे लिए एफोरिज्म नंबर 100 में दे रहे हैं। डोंट गेट कैरिड अवे, कंसीडर एवरी केस अ न्यू केस एंड इन्वेस्टिगेट इट थोरोली। और आगे चल के वो ये भी कह रहे हैं कि एवरी प्रिवेलिंग डिसीज is in many respects a phenomenon of a unique character differing vastly from all previous epidemics, to which certain names have been falsely applied. तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी डिसीज हो उसमें कोई ना कोई अलग चीज आपको डेफिनेटली मिल जाती है, और कभी हमें उसके बारे में ये नहीं सोचना है कि वो डिसीज के बारे में तो ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। सिमिलरली अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझने की कोशिश करें तो ना ही हमें डिसीज के बारे में सब ऐसा सोचना है, ना ही मेडिसिन के बारे में ऐसा सोचना है कि ये मेडिसिन तो वेल प्रूवन मेडिसिन है, इसके बारे में और क्या प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर हमारा एक सेंस यूज करने की कोशिश करें तो डॉक्टर हैनेमैन हमें यहाँ पे रीप्रूविंग करने के लिए, अगर हम डिसीज के बारे में ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि इसके बारे में सब कुछ पता है तो हमें पता करने की क्या जरूरत है, तो व्हाई शुड वी थिंक दिस अबाउट द मेडिसिन। तो मेडिसिन, इट इज दैट मेडिसिन इज अ वेल प्रूवन मेडिसिन, एवरीथिंग इज ऑलरेडी बीन नोटिस, और सब कुछ उसके बारे में ऑलरेडी लिखा गया है मटेरिया मेडिका में, तो हम उसका क्यों रीप्रूविंग करें। तो अगर हैनेमैन होते तो आज वो शायद इसके बारे में भी कहते हैं कि डोंट गेट कैरिड अवे बाय ऑल द सिम्पटम्स रिटन इन मटेरिया मेडिका, डू योर ओन प्रूविंग, खुद करो और खुद जानने की कोशिश करो, लाइक दैट, राइट। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, ट्राइंग टू टेल यू। तो एपिडेमिक डिसीज में कैरिड अवे नहीं होना है, हर केस को एज अ न्यू केस उसको लेते रहना है। इसके लिए सिर्फ एक एक्सेप्शन डॉक्टर हैनेमैन देते हैं, वो कह रहे हैं कि ये कॉन्टेजियस डिसीजेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसमें उन्होंने दो डिसीजेस के नाम लिखे हैं, मीजल्स और स्मॉल पॉक्स। इन कॉन्टेजियस डिसीजेस के बारे में ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब वो कह रहे हैं कि अब एपिडेमिक डिसीजेस में कैसे टोटलिटी बनानी है, कैसे टोटलिटी फॉर्म करनी है। व्हाट ही इज टेलिंग इज, close observation of several cases can make the physician conversant with the sign and symptom of this disease. So what he is saying that बार बार देखते रहो, बहुत सारे पेशेंट्स देखते रहो, क्लोजली ऑब्जर्व करो, सबकी टोटलिटी देखो, सबके सिम्टम्स कलेक्ट करो, और सारे सिम्टम्स, सारे सिम्प्टोमेटोलॉजी के बेसिस पे फिर अपना टोटलिटी जो है फॉर्म करो। अब नेक्स्ट पॉइंट एफोरिज्म नंबर 102 में डॉक्टर हैनेमैन कह रहे हैं, the physician should aim to get the characteristic symptom, general symptom and peculiar symptom in epidemic disease. This totality should be deducted from sufferings of several patients of different constitution. तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट से आपको सिम्टम्स लेने हैं और फिर उसके बाद आपको ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है उसके बनाने हैं, और उसके बेसिस पे फिर एफोरिज्म नंबर 102 के फुटनोट 89 में डॉक्टर हैनेमैन ने लिखा है कि इसके बेसिस पे फिर आप होम्योपैथिक
स्पेसिफिक मेडिसिन जो है चूज कर सकते हो। इसका अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये जीनस एपिडेमिकस के बारे में डॉक्टर हैनेमैन हमें समझा रहे हैं। अब यहाँ एफोरिज्म नंबर 103 में डॉक्टर हैनेमैन हमें एपिडेमिक डिसीज और सोरिक माइजम के बारे में भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एपिडेमिक डिसीजेस आर जनरली ऑफ अक्यूट कंडीशन कैरेक्टर। In all such diseases, the soric myxin must have to be discovered. अब सोरा क्यों डिस्कवर करना है? Because सोरा is the mother myxin और उसे हमें ढूंढना जरूरी होता है। Coming to the last aphorism of case taking, aphorism number 104. That is actually the end of case taking aphorism. He is telling that after finishing the case taking, we should select the medicine on the basis of characteristic symptoms of the patient. और इसी एफोरिज्म में डॉक्टर हैनेमैन हमें जब वो पेशेंट आपके पास सेकेंड टाइम आता है आपसे मेडिसिन लेकर जाने के बाद, जब वो दूसरी बार आपके पास आ रहा है तब कैसी केस टेकिंग करनी है, जब फॉलोअप के लिए आता है तब कैसी केस टेकिंग करनी है, उसके बारे में समझा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आपके पास जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आया है तो आपके पास ऑलरेडी पेशेंट के नैरेटिव कंप्लेंट्स है, आपके पास ऑलरेडी पेशेंट के कंप्लेंट्स लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ उसमें टिक करना है कि इसमें से कौन सा सिम्टम जो है एमेलियोरेट हो चुका है, कौन सा सिम्टम एग्रावेट हो चुका है, कौन सा सिम्टम चला गया है, कौन सा सिम्टम अभी बाकी है। साथ ही साथ दो और चीजों को नोट करना है, वो ये है कि मेडिसिन देने के बाद पेशेंट में कोई नया सिम्टम डेवलप हुआ या नहीं हुआ, इस चीज पे हमें खास ध्यान देना है। अगर हम आज के एरा में इसको समझने की कोशिश करें तो डॉक्टर हैनेमैन हमें यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में समझा रहे हैं कि जब आपने पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो प्रिस्क्राइब करने के बाद में उस मेडिसिन की वजह से नया सिम्टम अगर आया है, इसका मतलब वो हुआ है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो मॉडर्न मेडिसिन के लैंग्वेज में दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो हमें इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि मेडिसिन से सिर्फ ठीक हो रहा है, एग्रावेट हो रहा है, इतना ही नहीं है, हमें ये भी देखना है कि उसकी वजह से कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया है या नहीं। अगर आया है तो उसे नोट डाउन करके रखना है। अब एफोरिज्म नंबर 104 के फुटनोट में बहुत मजेदार बातें डॉक्टर हैनेमैन ने कही हुई है। सबसे पहले डॉक्टर हैनेमैन ने क्रिटिसिज्म किया है और वो भी मतलब मैंने जब वो फुटनोट पढ़ा मुझे अंदर से हंसी आई उस पे कि ये जो रिमार्क उन्होंने किया था वो आई फेल्ट लाइक इट इज काइंड ऑफ अ सरकास्टिक रिमार्क। तो उसमें क्या कह रहे हैं डॉक्टर हैनेमैन कि उन्होंने नोटिस किया है कि बहुत सारे फिजिशियंस, अब ये कौन से फिजिशियंस के बारे में बात कर रहे हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो उसमें क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे फिजिशियंस ऐसे होते हैं जो पेशेंट से पूछते कम है, सुनते उससे भी ज्यादा कम है, लिखते उससे भी ज्यादा कम है और याद तो बिल्कुल नहीं रखते। They ask a little, they listen even little, they write even little and they remember nothing. By the end of case, पूछना है नहीं, सुनना है नहीं, लिखना तो उससे भी कम है, just in one word, finish, हो गया। This is not rational practice. This is not case taking. और फिर उसके बाद में जो फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है उसके लिए भी डॉक्टर हैनेमैन ने बहुत एक मजेदार वर्ड यूज किया है। उसको डॉक्टर हैनेमैन उस फिजिकल एग्जामिनेशन के पार्ट को वो वहां पे कह रहे हैं कि इट इज अ सेरेमनी, फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ सेरेमनी। फिर वो अपना लिखना खत्म होने के बाद में जैसे सेरेमनी चली, चलो अपना हाथ दिखाओ, अपनी आंखें दिखाओ, अपनी टंग बताओ, फिर वो पल्स चेक करेंगे, इट इज सेरेमनी। वो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं रहता है। तो अगर केस टेकिंग प्रॉपरली की है तो फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपरली हो पाएगा, अदरवाइज वो सब राम राम भरोसे है, लाइक दैट इट हैपेंस। तो दैट इज अगेन नॉट अ रैशनल प्रैक्टिस, दैट इज नॉट अगेन अ रैशनल, वो तो सिर्फ आप कर रहे हो करने के लिए, ऐसा होगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट वहां पे डॉक्टर हैनेमैन फुटनोट में मेंशन कर रहे हैं पॉलीफार्मेसी के बारे में, ये कभी भी नहीं करनी है, पॉलीफार्मेसी नहीं करनी है, उसके बारे में भी डॉक्टर हैनेमैन ने फुटनोट में लिखा हुआ है। साथ ही साथ
रैशनल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी, पहले तो रैशनल प्रैक्टिस के बारे में उन्होंने कहा, फिर वो रैशनल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी बता रहे हैं। तो रैशनल प्रिस्क्रिप्शन जैसे मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया है, राइट मेडिसिन टू अ राइट पर्सन इन अ राइट डोज विथ अ राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल बी अ रैशनल प्रिस्क्रिप्शन। सही दवा सही मरीज के लिए सही डोज में सही तरीके से सही रूट से अगर दी जाती है तो उसको हम रैशनल प्रैक्टिस कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा केस टेकिंग का एफोरिज्म जो है 83 से 84 तक खत्म होता है, लेकिन केस टेकिंग खत्म नहीं होता है, क्योंकि इनके अलावा भी क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज में बहुत सारी अलग अलग डिसीजेज और उन्होंने एक्सप्लेन की है, जैसे वन साइडेड डिसीजेज है, लोकल डिसीजेज है, मेंटल डिसीजेज है, अल्टरनेटिंग इंटरमिटेंट डिसीजेज है। तो ये सारी डिसीजेस की भी अपनी केस टेकिंग की प्रोसेस है। जो भी इंटरेस्टेड लर्नर्स है तो उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली वो इन एफोरिज्म्स को जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके मेंशन किए हैं उन एफोरिज्म्स को पढ़िए। एफोरिज्म नंबर 173 फॉर वन साइडेड डिसीजेस, 174 फॉर लोकल डिसीजेस, एफोरिज्म नंबर 210 टू 230, टोटल 20 एफोरिज्म्स लिखे हैं मेंटल डिसीजेस की केस टेकिंग पे, मेंटल डिसीजेस के बारे में कि ये डिसीजेस क्यों होती है, कैसे होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। एफोरिज्म 231 232 फॉर इंटरमिटेंट डिसीजेस एंड अल्टरनेटिंग डिसीजेस। So with this I finish my today's lecture on case taking. Thank you very much. If you have any query, please feel free to ask the questions on my email ID amolpathak1585@gmail.com। साथ ही साथ मैं आपको रिसर्च गेट पे भी मिल जाऊंगा, मेरे आर्टिकल्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, आप वहां से आर्टिकल्स को स्टडी कर सकते हैं। Before I finish, again I would like to thank all the patient listeners. आपने बहुत अच्छे से सुना, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे, थैंक यू सर वेरी मच। और मैं डॉक्टर नूरी का भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर नूरी और होम्योपैथी 360 को कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सब लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू। Over to you, Dr. Nuri. Hello. Hello. Hello.